Okay, so welcome back to Coding Ninjas, guys. I am Kabir Singh, and I'm back again with another stream for you guys. So, as always, our Sunday topic is again uh, All right. an interactive stream with Naman, and Naman will be helping me out to share a good roadmap on how to get into Microsoft and how Naman learned DSA and how he cracked Microsoft. So it's gonna be a good interactive stream. I guess we'll wait for everybody to join in, and also I guess we have some issues with Naman's lighting. I'll wait for you, Naman. You can take your time to I resolve that guess. issue. Sure. Yep. No issues, no issues. Till then, I'll just interact with the chat, guys. 10 people right now, and I would like everybody to just write a hi in the chat. Let's see who all are there. Let's see who all have come to, see the roadmap for Microsoft today. I guess, yeah. So just write a hi in the chat, everyone. Come on, let's see who all are there. So we have Ashish Jha, okay, and let's see who else. We'll be waiting. Aryan Jha, nice. Okay, so Naman, how are you doing? How are things right now, and what do you do nowadays? Can I get to know about you? Since yeah, this is the first time I'm interacting with you over the All live right. stream. Yeah. Hi, Kabir, and hi everyone who's on the chat. So I'll introduce first myself. I just completed my fourth year a month ago, and I Okay. was a former intern at Microsoft. And again, that I got a PP over there only. So I'll be joining Microsoft this year. Tentative date is 25th of July. And Okay. yeah, I've been streaming with Coding Ninjas from a couple of months, and yeah, that's pretty much about my introduction. And right now, uh, I'm teaching. I'm a mentor. I'm an educator at Coding Ninjas itself. Okay. I take a live course there, and along with that, as you know, we all take DSA live series over YouTube, also. Yeah. So Right. Okay. yeah. That's great. That's great to hear. So, how was your experience as an intern and in Microsoft? So if I talk about those 6 months, they were the best ones because I got to know about a lot of things. Because in college we were just focusing on DSA, data structures, preparation, and Right. just these stuff. I mean, before intern, I guess around 4 to 5 months, I was just practicing. And then when we go to a company, and when you talk Hmm. about Microsoft with a very great culture, right? Like Right. Microsoft has a very good work culture, work balance, and stuff. So it was a great journey. I was in the notification and feeds and notification team, in which you're working on notifications, so that nowadays if you don't get any single notification, then it's a like bit chaotic for Yeah. you It's guys, it's a right? blunder. It's a blunder. So we were working Yeah. a lot on it, like all the backend stuff related to feeds, and I was completely working on the compression side. So Okay. that it can compress, and I was working on the queue message. So it was a very good experience for me, since Okay. not being from computer science, I learned a lot of things. So it was a very good Uh-huh. journey, and I Okay. So met. you weren't from CS background. Yeah, I'm not from CS background. You are from. Electronics. Oh, nice. So that's something really interesting because I guess this is something we've been hearing for a long, long time now. That not only computer science students get into FANG, I guess other students are also equally participating in getting into IT jobs. Exactly. Yeah. Okay. So, Naman, this stream has the topic of roadmap to get into Microsoft, and I think both of us are going to make it very interesting for the students, and we're going to make it really interactive with them. Okay. So let's start with the topic on how you actually started programming. Since you're an electronics student, a lot of people in my chat do come from electronics background, VCA background, etc., who are not into B.Tech computer science, B.Tech IT right now. So how did you get the vibe of starting your programming, and when was the first time you wrote Hello World and all that? So yeah, about Hello Yeah. World, I'll tell you. So I was electronics. I'll tell you my journey. Like
before getting into college, right? At the time Yeah. of J, my J didn't go well because the center was not in the city, so I didn't sleep the last night. And Okay. obviously, I was not much into studies, so J didn't go that well. I landed up Uh-huh. in production engineering. So my Okay. first branch in the college was production engineering. My college is Punjab Engineering College, Chandigarh. So Mm-hmm. actually, I was not happy about that. Okay. So we had a chance to upgrade. In first semester, I upgraded myself into electronics. And फिर जब Mm-hmm. इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बचा तो मुझे वो भी समझ नहीं आया बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स वाज वेरी chaotic. It's very hard. Like trust me, it's very Okay. hard when you see those diodes, when you see VLSI, they're like, oh my god, they're very Yeah. hard, you know. Confusing. So, and I had zero interest in that. So when I saw that I scored pathetically bad, then Mm-hmm. there was one day. There's like I was living in a hostel, and a lot of students, those who were already in electronics, they were studying something, right? So they had Hmm. course कोडिंग निंजास को उनके पास कोर्स था तो वो पढ़ रहे थे एंड अंकुश सर पढ़ा रहे थे जो डीएसए का फाउंडेशन कोर्स है एंड मैं मेरे दोस्त के पास जाके बैठ गया था आई रिमेंबर दैट इन जनवरी 2020 जब मेरा फोर्थ सेमेस्टर चालू हुआ Uh-huh. था मेरे दोस्त के कमरे में था एंड ही वाज स्टडिंग प्रोग्रामिंग बिकॉज हमारा Okay. सेमेस्टर आने वाला था तो Okay. मैं ऐसे जाके बैठ गया आई सॉ अंकुश सर राइटिंग समथिंग ऑन स्क्रीन एंड ही वाज टेलिंग समथिंग वो प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे मैं तो किसी बीच के लेक्चर में था बट वो सिखा रहे थे आई रियली लव द यूआई really loved the way he teach, really loved the way he spoke everything, and he was Mm-hmm. telling things. तो मुझे ना थोड़ा fascinate किया यार अपने को भी कुछ करना तो है ही. Hmm. Either I'll यही have कर to go लेते to the हैं. side, है ना? Either I'll have to study electronics या तो वो option है मेरे पास या फिर programming option है. मेरे को उस time Right. ये समझ Right. आ गया था electronics अपनी बस की नहीं है. Right, right. अपने There's बस a point of time where everybody in college, even if you talk to a computer science student, there's a point of time in life wherein you understand कि नहीं होगा भाई, हाँ. अपना So नहीं है ये. This is not that was our the thing. point. हाँ that Yeah. I'll tell you मेरे को ना डायोड का Right. प्लस माइनस भी नहीं पता था. I'll tell you मतलब एक समय Okay. दो एक साल हो गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड मेरे को प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी नहीं आता था तो लैब में Okay. जाते थे तो भी मैं बता नहीं पाता था सो उस टाइम समझ आया कि नहीं है तो आई थॉट ऑफ लाइक गिविंग इट अ ट्राई बट कॉलेज Hmm. के टाइम उसके बाद हमारी थोड़ी फ्रेशर वेशर का टाइम आ गया था तो उस टाइम पढ़ाई नहीं हुआ ठीक है Correct. तो 15 मार्च को लगा कोविड आई थॉट ऑफ टेकिंग अप दैट कोर्स क्या चलो अब घर जा रही हैं कोविड आ गया है सब कुछ बंद है ही महीने भर के लिए लेट्स गिव इट अ ट्राई 15 मार्च को व्हेन द कोविड नोटिस केम आई केम टू होम आई टुक दैट कोर्स एंड मैंने पूरे महीने भर दबा के पढ़ा Okay. लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पहला प्रोग्राम लिखा होगा 15th ऑफ मार्च के बाद हेलो वर्ल्ड वगैरह ये पहले प्रोग्राम मैंने उस टाइम लिखे थे एंड फ्रॉम 15th ऑफ मार्च टू अप्रैल आई कंप्लीटेड माय डीएससी कोर्स मैंने Okay. खींच दिया बिकॉज छुट्टियां तो थी एंड आई वाज लिविंग इन एरिया कि मैं घर के बाहर भी नहीं जा सकता था सब कुछ तो बंद था सो करते क्या पूरे Hmm. दिन सो आई थॉट ऑफ गिविंग माई सेल्फ Okay. टू स्टडीज एंड आई डिड एंड तब से मेरा प्रोग्रामिंग चालू हुआ एंड I completed my whole programming journey in like 3-4 months, and August I got an intern. So this was pretty. That's nice. That's nice. Like that's really interesting, and it's pretty relatable because the same thing happened with me. Just there was this difference that yeah, I was from computer science background, and I never wanted to go for computer science. I wanted to go for marine engineering, but due to some Okay. issues, I couldn't go for that. But then what happened was that I didn't even have the courage to buy C++ and DSA course together. ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं होगा. सो आई वाज लाइक कि ओके, एक काम करते हैं, सबसे सस्ता वाला कोर्स लेते हैं और पढ़ के देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है आगे पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं. ऐसा सीन था. So that's what I did. I bought the basic C++ fundamentals course from Coding Ninjas only, and that's when I started programming. So फिर मजा आया तो I started doing more. Otherwise तो I was having zero interest in doing it. Even Okay. I did had IP in my curriculum. So I I'm had IP, I had oh IP, and and I was like कि okay, IP तो नहीं हो रही है, Java नहीं हो रहा है मेरे से, तो नहीं होगा programming and all. So this was how it was. Okay, so guys, one more thing. I'll be coming to the chat questions in like 5 to 10 minutes. Let's just build up the momentum for the stream first, and then I'll start answering your questions as well. Both of us are gonna come, and we're gonna talk about the questions that you ask. Okay. So right now, talking about a roadmap for Microsoft, again, being an electronic student, we can consider you to be an electronic student also equivalent to a student from CSE who doesn't know programming at all.
right? It's going to be one and the same thing, because at the end of the day, branch, I guess Doesn't. today you've made it pretty clear that the branch doesn't matter, since you being electronic student is working in Microsoft. So I don't think branch actually matters, right? So you started from C++, right? Yeah, exactly. Yeah. Yeah, So correct. C++ and DSA was something you did, but after that, what was your roadmap? How did you follow, and how did you go forward studying after lockdown, in lockdown, and for your placements? Okay, so after my DSA course, I'll tell you. So my preparation has more of Code Studio, because initially Code Studio का नाम Code Studio नहीं था, it was just a platform there. Yeah. So initially I was just practicing over there. Actually, what happened was, as soon as I completed my DSA course, I talked to my seniors. तो उन्होंने कहा यार Hmm. DSA कर लो, हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा. तो there's a senior who told me कि Microsoft के लिए ना लीड कोड कर लो. ठीक है, Okay. बट मुझे ना इतना प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना अच्छा नहीं लगता था. तो द फर्स्ट ट्राई दैट आई गेव वाज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ओवर कोड स्टूडियो ओनली. तो वहां पे इनके Okay. ना डेली विनर्स, डेली पॉइंट्स, वीकली विनर्स एंड मंथली विनर्स ये लिखे हुए आते हैं. माय फर्स्ट पॉइंट जब मेरे को अच्छा लगा था, आई बिकेम द वीकली विनर. वीकली मेरे पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू Okay. सॉल्व क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस. दैट वाज माय मोटिवेशन, दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स कि मेरे को वीकली विनर पे रहना था. तो मैंने कोड स्टूडियो से चालू किया था. देन आई वेंट टू लीड कोड. मैंने लीड Okay. कोड पे आई आई डिड अराउंड 250-300 क्वेश्चंस. मैंने इतना क्वेश्चन Okay. अपना टारगेट बना लिया. आई हैड माय टारगेट विद इन माई सेल्फ कि मैं रोज के 10-10 क्वेश्चन करूंगा. एंड आई थिंक the only thing that has helped me is constant sitting. This is Consistency what of your programming. consistency, constant sitting. मतलब एक होता है ना, एक सिट में जितना ज्यादा बैठ सकता हूँ. That was Right. the biggest thing. So while I was preparing, मेरे को लगता है कि मेरा schedule, the schedule that I followed was the most important thing, because I think आजकल हम लोग दिन में नहीं पढ़ पाते हैं because of this noise. You can see the city noise and all stuff. So what I did was, because it was complete lockdown, I used to study at night, because it was all there was all You had silence. nothing to do in the daytime, so you can sleep हाँ, over at that हाँ, तो time. दिन में सो जाओ एंड रात को मैं पढ़ता था. बिकॉज एक्चुअली आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, तो बच्चे भी होते थे. तो उस चीज से रिफ्रेन करने के लिए आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट. तो मैं रात को 9-10 बजे बैठता था. आई यूज्ड टू गिव कॉन्टेस्ट. स्ट्रेच में सुबह 6-7 बजे तक पढ़ता था. तो ये जो स्ट्रेच होता था ना, इसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं रात में कहीं जा भी नहीं सकते, तो पढ़ ही लो इससे अच्छा. हाँ हाँ, ठीक है. point. तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. अब जैसे ही मेरा डीएसए प्रेपरेशन खत्म हुआ ना, मेरे को लगा कि अब मेरा लेवल थोड़ा शिफ्ट नहीं हो रहा है. राइट. जो जो ग्राफ था वो अब ज्यादा अच्छे से नहीं जा रहा है. सो आई थॉट ऑफ टेकिंग अप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स. अब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स में पहले स्टार्टिंग में खुद ने करने लगा. ये स्टार्टेड विद कोड शेफ. नाउ कोड शेफ में मुझे कुछ कुछ दिक्कतें आने लगी, बिकॉज देयर वर सम टॉपिक्स दैट आई डिडंट नो. तो अब Hmm. उसका क्या कहते हैं, सो आई टुक अप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स ऑफ कोडिंग निंजास ओनली, जिसमें पारिक सर ने पढ़ाया था. मैंने वो कोर्स किया. उसके बाद शिफ्टेड ऑन टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और फिर इस चीज ने मुझे हेल्प किया. और जब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो फॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट आई थी. 10 दिन हुए थे. मेरा टेस्ट अच्छा गया था, क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत मेहनत करी थी, बहुत पढ़ा था, तो मेरे को सब कुछ याद था ही. Okay. दैट्स व्हेन आई क्रैक्ड माय टेस्ट एंड इंटरव्यूज क्रैक कर लिए, एंड आई डिड इट. Okay. So the competitive programming part out here, since you've cleared Microsoft, I would like to ask. Lately we saw in the past, 1.5, 2 years, there was a quick debate on this topic, that if you need competitive programming for FANG companies or not, right? So what do you think? Did it help you out at that level, Absolutely yes. or? Absolutely yes. So firstly, I'll just tell you, there's a myth कि competitive programming के बिना फैंग क्रैक नहीं हो सकती. तो ये बिल्कुल गलत है. Yeah, that's ठीक what है. that's what my question was. That's Yeah. that's wrong. That's completely wrong. I do have people जो मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं. They have never Mm-hmm. done competitive programming. They've just done DSA, and they're still in Microsoft. There are people, those who have just done DSA, वही same questions, and they are in Google, right? So Mm-hmm. this is not a point कि CP की वजह से ये हुआ है. What I tell everyone about CP is nothing other than DSA. It just gives you confidence to see a new question. Right. ठीक है. Correct. Whenever we give contest, जब भी हम कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे जाते हैं, so तो you see new questions. So when you do competitive programming, ये आपको ना उन क्वेश्चन से लड़ने का ना वो मोटिवेशन देता है, that you can do it. Right. When you're Okay. doing DSA, आपके सामने सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं.
बट competitive programming you're feeded with new questions and all. तो ये आपको Correct. confidence देगी जो आप contest या internship के test देने जाओगे या फिर placement test देने जाओगे, ये उस जगह help करता है. ठीक है. So Right, I right, don't right. think CP necessary है. I'm not saying CP is necessary, but I say people क्या CP कर लो, it'll just कर give you a लोगे तो boost. better ही है, कर right? ले कर लोगे better है. It's There's like it's nothing. just a tip. हाँ It's just cherry on top, हाँ, right? इट्स जस्ट चेरी ऑन टॉप. और मैंने आजकल ना रीसेंट शिफ्ट भी ये देखा है. आई टेल यू अबाउट, आई सीन सम टेस्ट. अभी रिसेंटली मैंने कुछ कंपनीज के क्वेश्चन देखे. नाउ दे आर स्टार्टेड आस्किंग सेगमेंट्रीज एज वेल. ठीक है, वो Okay. सेगमेंट्रीज पूछने लग गए हैं. दे आर आस्किंग फेनविक ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन. एंड इफ यू वांट टू टारगेट कोऑर्डिनेशन और ये सब, देन तो आई थिंक Because I guess the point is people now in the companies also know that people are shifting from DSA to competitive एग्जैक्टली programming, and they've एग्जैक्टली started putting it as their syllabus now, एक्चुअली right? जो Because they, डिजिटल, yeah, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, इससे बहुत सारे बच्चे प्रोग्रामिंग में घुस गए. तो अब जब सबको प्रोग्रामिंग आएगी तो एज पे जो चीजें देगी, दैट इज right, कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग. दैट्स द ओनली थिंग. correct. या Just a scaling kind of a thing can be done हाँ, through CP. बाकी देयर इज नथिंग लाइक, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर पीपल टू डू इट. Okay. So, till now, from the past 20-minute chat, we can conclude that, selecting a language, doing it consistently, solving DSA, studying DSA, solving DSA questions is the correct roadmap. And then, if you have spare time on you, you can go for competitive programming. If you don't, you can still crack it out. But yeah, it's just a extra tip on your resume and extra tip on your skills if you do competitive programming, right? So let's just shift for a while to the questions from our people out there. So we have, okay, I'll just scroll up and I'll just see the questions first. Okay, bro, please give me tips how to solve DSA questions. I'm feeling demotivated because I'm not able to solve DSA questions. Please help. So yeah, Naman, when you might be solving DSA questions, there had been a time wherein you used to sit and you didn't get the solution. So did you get demotivated or did you push yourself to see the solution and solve it, or what? What So was your catch? a lot of times, yeah, a lot of times. I'll give you a frank answer on it, but Okay, देखो, demotivation होना तो सबका होता ही यार, because there's a point when you're right, demotivated, when you practice a lot. So correct. अगर तुम demotivate हो रहे हो तो ये अच्छी बात है. That means that you're practicing. Hmm, ठीक है, वरना बिना प्रैक्टिस करे तुम डिमोटिवेट नहीं हो सकते. तो correct, अब राइट, सो अब डिमोटिवेट होने के बाद पता है क्या करना है. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा ना, जस्ट गो फॉर द हिंट, गो फॉर द सोल्यूशन. there's no harm in it. लाइक इवन आई टेल अबाउट माई सेल्फ, मैं भी या सोल्यूशन देखता हूँ, मैं भी हिंट देखता हूँ. ऐसा नहीं है कि इफ वी आर सिटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट, अगर कोई गूगल में तो उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर ऑल लाइक, correct. हम सारे एक जैसे ही हैं. बट ठीक है, प्रैक्टिस हमने ज्यादा की है. सो व्हाट यू कैन डू इज, after 20-30 minutes of your question, you guys can just check out the hint. और अगर hint समझ नहीं आता है, go for the solution. YouTube है आपके पास, solution है, solution देखो. There's no Okay. particular harm in it, but again, उस question को एक बार कोड जरूर कर लेना खुद से. कोड कर लो जिससे तुम्हें समझ आ जाएगी क्या था क्या नहीं था. Correct. Take some test cases and do it. कि वो क्यों पास करे, और थोड़ा सोचो, एक दो टेस्ट केस लेके सोचो एंड सी द सोल्यूशन, डू इट. मतलब ये काफी लोग मुझे कहते हैं कि सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए, पहला हिंट देखो, दूसरा हिंट देखो. अगर नहीं समझ आ रहा, प्लीज देख लो. टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द Correct. क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन दैट यू डू, देखो क्वालिटी तो Hmm. अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है. देखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज समथिंग, आई गेट इट, बट क्वांटिटी ऑल्सो हेल्प्स यू. मतलब जितने ज्यादा तुम लोग Correct. करोगे ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम अदर वे. Yeah, Right? if we can kind of balance हाँ, it kind of balance balance it. it out, at the end of the day, even if you watch the solution and after that you try run the code and you code it up at least twice or thrice again on the same platform on the same window again and again, I guess it kind of gets imprinted in your mind. Simple. Exactly. So I don't think we kind of need anything more than that, and I guess that's more than sufficient. So our quality manages is managed and the quantity gets increased as well. Yeah. Just but demotivate मत हुआ करो. मतलब it's just a process actually. It's just a process. Right. ये process के अंदर होता है. ये अलग नहीं होता कि Correct. हम demotivate नहीं होते. It's a process. You're going to go through it. So even we went through it. So Right. And 66 people watching, guys, I would just request you to hit the like button, please. Okay. Next question, sir. Microsoft not sending me an assessment link. I don't think we can help you out with that. That's something you'll have to wait for. How to build logic? How to build logic in programming? Yeah, that's really a nice question out there. So,
building logic, Naman, has been a problem for a lot and a lot of students out there. So a lot of students, I guess, who you've mentored, who I have mentored till now, have gone through this, and they're not able to build logic very easily. Since you are also taking a live course, teaching them even the basic for loop, the logic behind the for loop doesn't click them, Okay. right? Because giving them the for loop, I guess, makes it easy for them to understand what a for loop is. But when you ask them to implement that in a pattern program, in a pattern problem, I guess that time they get stuck. So how do you think we should guide them to do that? Okay, so I'll tell you, the only thing that can help you in this is pen paper practice. A lot of times when I teach students, पता है बच्चे क्या करते हैं? They just see the lecture, right? Right. Even a lot of times when we see something on internet, when we check YouTube for a course, when we do something, पता है हम लोग देखते रहते हैं. We don't make notes. और Hmm. या फिर अगर हम notes ही बनाते हैं, we do make notes of the theory only, right? Correct. But theory is something different and question is something different. So Correct. whenever you do a question, try to take a pen and paper and try to write test cases over the paper and try to write it iteratively कि हो क्या रहा है. So if you talk about pen paper test, तो आप जब भी लिखोगे ना, आप ध्यान रखोगे कि आप ना ऐसे मतलब रैंडमली क्रॉसेस नहीं बनाओगे. फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट? ट्रायंगल Correct. ऑफ स्टार्स. सो जब हम खुद लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं? वी राइट इट लाइन बाय लाइन. यहाँ से इंट्यूशन आ गया देखो कि हमें लाइन बाय लाइन काम कर रहा है. दैट मीन्स आई हैव टू डू वर्क रो बाय रो. ठीक है. Right. सेकंड लॉजिक, इफ यू टॉक अबाउट ट्रायंगल, मैं कहाँ पे रुका? डायगोनल पे रुक गया. यानी ऑन द रो आई एम, मेरे को उतने स्टार्स बनाने हैं. सो जस्ट राइट इट ऑन अ पेपर. पता है देख के चीजें इतना विजुअलाइज नहीं होता. जब हम लिखते हैं तो वो समझ आती हैं. तो समझ आता है. सो वेन एवर आई डू अ क्वेश्चन, अब जैसे मैं सेगमेंट ट्रीज का भी क्वेश्चन करता हूँ, इफ आई डू अ क्वेश्चन ऑफ बिट मैनिपुलेशन या फिर बिट मास्किंग, मैं कभी उसको ऐसे नहीं लिख सकता. भले ही मेरे को एक लाइन लिखनी पड़े, मेरे को पेपर पे लिखना पड़ता है. सो व्हेन आई राइट ऑन पेपर, मेरे को लॉजिक क्लियर होता है. ये है, दिस इज अ टेस्ट केस, आंसर लिखो, टेस्ट केस निकालो. बट देख के कभी तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा. एंड इट इज विद द बिगिनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में. पेन पेपर टेस्टिंग करने लग जाओ. ट्राई टू टेक अ पेन एंड पेपर पे टेस्ट केसेस लिखो, सॉल्व करो पेपर पे. आफ्टर जब तुम्हें आंसर मिल जाए तुम्हारे पेन पेपर पे, देन गो फॉर कोड. Okay. ठीक है. दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू. पेन पेपर हेल्प, और ये तुम्हें आगे भी जाके हेल्प करेगा. दिस इज व्हाट आई डिड टू सॉल्व माय लॉजिक. और कभी कभी सामने वाले को देख के भी लॉजिक क्लियर होता है. फॉर एग्जांपल समटाइम्स मैं सामने वाले को कोड करके, मेरे को पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले की थ्योरी नहीं समझ पाता हूँ, बट देन ही राइट्स कोड, तब मेरे को चीजें समझ में आने लग जाती है. तो सामने वाले पे भी डिपेंड करता है हाउ डज ही टीचेस यू. तो इट इज अ Hmm. टू वे थिंग. यू शुड आल्सो राइट इन पेपर एंड यू शुड आल्सो सी व्हाट सामने वाला क्या कर रहा है. Right. तो और ये Okay, and प्रेफरेंस. one question which I've been getting for a long time from, like, it's, I guess this is my fourth or fifth stream on this channel, and I've been getting this question lately, that is Python good for DSA, for fan companies? Okay, I'll tell you. Like there's no problem with Python. तो मैं सबको ये बताता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस कि तुम्हारा क्या यूज केस है. फॉर एग्जांपल आई ओनली सजेस्ट पाइथन फॉर पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन एआई और एमएल या डीप लर्निंग न्यूरल Okay. नेटवर्क, देन गो फॉर पाइथन. द बैड प्रॉब्लम अबाउट पाइथन इज पाइथन हैज लाइब्रेरीज. ठीक है. Correct. एंड व्हेन यू गो इन अ कंपनी, जब टेस्ट आता है ना, पीपल एक्सपेक्ट यू टू राइट योर ओन थिंग. ठीक है. तो अगर You can't use the तुम्हारे, pre-defined हाँ, libraries over there. दैट्स द ओनली पॉइंट. अब पाइथन में क्या है? लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है. अब इंटरव्यूअर आएगा तुमसे ये बोलेगा तुमने तो प्री डिफाइंड चीजें लिख दी, तुमने क्या काम किया है? तो काम पाइथन का हुआ. पता है कई कई ऐसे कोड होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कोड जो 100 लाइंस के सी प्लस प्लस में लिखोगे, देयर आर जस्ट 4 और 10 लाइन कोड इन पाइथन बिकॉज दे हैव लाइब्रेरीज. सो विच इज अ बैड थिंग. सो दैट्स आई डोंट प्रेफर पाइथन, बिकॉज उसमें आप कुछ ज्यादा चीजें नहीं सीख रहे. लाइब्रेरी इज ओनली डूइंग वर्क, यू आर नॉट लर्निंग अ लॉट ऑफ लॉजिक. So Correct. that's why I say people to go to C++ as there's a lot of path. Even अगर आप चाहो competitive programming में जाने का, तो C++ is going to help you because it is fast. Python being an Mm-hmm. interpreted language, it is a very slow language. तो कई कई question pass नहीं होते. But again, I don't think if you talk about just DSA, there's no problem in it. It depends on the interviewer and a company. There are multiple companies जो सीधे मना कर देती है Python में code नहीं करना है. So it makes you limited to those stuff. Okay. So we have a couple of questions. I guess we can combine two, three of them, like how to use the correct data structure, how to think of edge case, how to identify which data structure to use. So whenever you're solving a problem, how do you identify कि इसमें ये data structure use होगा, ये इसका edge case होगा? I guess that's practice.
we That's must say. practice. That's practice. That's practice. I mean, um, there are particular use case. Like there are multiple approaches to do it. I'll tell you when it comes to data structure ना I don't think सिर्फ एक ही data structure से काम हो जाता है. For example ऐसा नहीं है कि map से ही होगा. There are sometimes जब आप arrays के अंदर भी map बना रहे हो. There are sometimes जब आप bucket array बना रहे हो. So I guess practice is what makes you perfect. Practice से ही चीजें हो जाती है. मतलब there's no particular thing that I should say on it. This is just practice. I I guess we can say that, say you ride a bike. So when you start riding a bike, you start to wobble in the initial days, right? But once you practice for 1 month, you're riding for a year, you know कि वो बाइक कहाँ से निकल जाएगी और कहाँ से नहीं निकलेगी, right? You know कि exactly. हाँ इतने गैप में से मैं बाइक निकाल सकता हूँ and इतने गैप में से I can't. So that idea and that intuition that you get of riding a bike, it's like similar to coding. You get that Exactly. intuition कि हाँ इस चीज से ये चीज हो जाएगी. So I guess with practice, more and more questions when you solve, you get that intuition that yeah, using this I'll be able to solve it up, right? And I guess then trial and error works out there, Exactly. right? Yeah, I Okay. mean, I've never worried about data structure कि कौन सा data structure use होगा, because when I come to paper, जब मैं paper पे practice करता हूँ ना question को, there are multiple ways. हो सकता है Okay. कि मैं हो सकता है कि I have to use multi set, हो सकता है कि मेरे को map use करना पड़े. So never restrict yourself to a particular data structure. जब तुम Correct. practice करोगे तुम लोगों को idea लग जाएगा कि क्या data structure will be the best one. Right, That's it. right, right. How much advanced topic of DSA is required for preparation? Is Java a good to go language for preparation, or CPP is necessary? I guess CPP या Java में से कुछ भी choose कर सकते हैं हाँ for मतलब now. there's no particular, हाँ. but only thing that I think is कि जावा के अंदर pointers नहीं होते. So Hmm. आपसे इंटरव्यूज के अंदर ना पॉइंटर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ पॉइंटर, व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. तो ये जावा के अंदर टॉपिक नहीं होता. दैट्स व्हाई यू कैन गो सी सी सीख सकते हो. एंड अलोंग विद दैट मैंने कई कई टेस्ट देखे. दे ऑलरेडी दे ट्राई टू आस्क यू एमसीक्यूज एज वेल इन देयर इंटरव्यू टेस्ट. और Correct, correct, correct. MCQ के अंदर दे आस्क यू सी, राइट, स्कैन एफ, प्रिंट एफ. तो अगर Yep, तुम्हारे पास सी yep. प्लस प्लस की नॉलेज है देन यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, हाँ राइट. हाँ हाँ. I've gone So through this. yeah, Yeah. I think थोड़ा edge है C++ का, but again Java is also equally good. Okay. Is a good college important for good placement in programming? Good Certainly question. not. Certainly not. Certainly not. कॉलेज डिपेंड नहीं करता यार. बस मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, हाँ ये ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस की ड्राइव का क्वेश्चन होना चाहिए वैसे. सो इफ यू टॉक अबाउट गुड कॉलेजेस तो उनके ऑन कैंपस बहुत अच्छी कंपनी आती है. बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज प्लेस हो जाओगे सारे लोग. बट अगेन यू हैव टू शो योर यूएसपी कि तुम कहाँ अच्छे हो. तो Correct. जैसे काफी जितने आई गेस मोस्टली यूट्यूबर्स जो फेमस है काफी ज्यादा, ठीक है, all of them I All guess of yeah. 90 to 95% I don't think they are from IITs. मेरे ख्याल से Nobody's from आईआईटी वाले IIT. I मेरे ख्याल don't से think. आईआईटी वाले बच्चे जो फैंग में हैं they are not even यूट्यूबर्स आई गेस. ठीक है. Correct. मैं आई डोंट रिमेम्बर एनीवन. आई थिंक सो. तो जितने भी Yeah. मोस्टली है फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस ओनली. तो उनको देख के तुम लोगों को मोटिवेशन मिल सकती है दैट एवरीवन कैन डू. इवन आई एम नॉट फ्रॉम Correct. गुड कॉलेज. Correct. ठीक है. I guess पंजाब में. everybody हाँ, from my contacts, every person doing YouTube as a part even time or a full time career. I guess everybody who I know, even though they have 2 lakh subscribers, are not from very good colleges. They're from even tier three only. I guess Striver is also from a Yeah, regional he's from a college, right? tier three. Yeah, he's from a tier three college. Tier 3 college, Yeah, so Jalpaiguri. that's what If I'm. I Yeah, yep. So that's what I'm exactly. saying. And that guy, I've been talking to him for a long time now. And again, looking at him, you can never say that he's not from an IIT. So Exactly. studying in a tier three college and having a unique, personality of an IITian is the key, wherein you get a good job from Yeah, a low exactly. placed That comes college with also. time. That comes with time. That comes with practice. So if you're going to do Yeah, it, I don't think college is a barrier. I don't think off campus or on campus is a barrier. The barrier is you. If you study well, I guess you can crack everything. There's no correct, problem. correct, correct. I know Java and still have time before admission in undergrad. So, do I need to learn any language? I didn't get it. Can you repeat it? So, the student knows Java already.
Okay. but there is time for her to get into college right now. So, is there any other language that should be learned before going to college? Okay, so if you, I'd say, I think changing language is again up to you. I mean, if you don't do it, then Yeah, also it's okay. But if you want to shift from that language, and if you have time, then you can shift to CPP, as you'll just take 10 to 15 days to shift, because आपका लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है, चाहे कोई सी भी correct, लैंग्वेज करो, correct. whether it be Python, whether it be, बस सिंटैक्सेस चेंज होंगे and थोड़ी प्रैक्टिस चेंज होगी. So if you want to learn a new language, I guess you can just learn CPP, as it is going to help you in your interview questions, whether it be MCQs, whether it be your interviews. And else I don't think it is a problem. तो अगर Java में continue करना है करो, I that's completely okay. Okay, I'm able to think of logic, but it's the brute force solution. And when I try to think for optimized, then only brute force solution runs in my mind. What should I do? Again, It yeah, I guess all of these questions are just pointing to us, practice. yeah, us 1 year back, 1.5 year back in the situations which they are right now. So, what do you think, Naman? I literally don't have any answer, because the only answer to it is कि यार practice कर लो. मतलब I'll tell हाँ, you, मैं ना मैं सबको सिर्फ यही कहता हूँ कि पता है, एक टाइम आएगा जब तुम लोगों को ये स्ट्रीम्स, मतलब स्ट्रीम से सिर्फ एक चीज सुनने को मिलेगी, अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तुम सच्ची अच्छी जगह पहुंच जाओगे. ठीक है, correct. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो अगर तुम Right, प्रैक्टिस right, कर right. लोगे ना, rather than गोइंग टू सम अदर प्लेस, अगर एक जगह बैठ के प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ना आराम से सॉल्व हो जाएगी. तो मेरा कहना ये है, प्रैक्टिस करो, और ये आंसर का तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा. एंड स्टे Correct. मोटिवेटेड. Yeah, I guess the point is when we were preparing for interviews, when we were, just normal college students and not mentors, not interns anywhere, we used to get all these problems. But I guess at that time there were not many people coming and telling us what to do. Exactly. We Exactly. dealt with them, and I guess the only thing that we used to deal with all of these things are practice. We just didn't leave our consistency because we knew कि भाई कोई नहीं है बताने वाला, खुद ही करना है जो करना है. So I guess it's the same thing with you because I didn't have any seniors out Today telling me we have about. a lot of, yeah, today we have a lot of people guiding us, like we are Yeah, guiding you guys. Like at 2 years ago, even I talk about 2 years ago, कोई live streams नहीं होता था. right, There were no live streams, कुछ नहीं होता था. Even seniors भी, they were busy in their life. वो कुछ नहीं right. बताते. I'll tell you, मतलब मेरे seniors ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि DSA important है, DSA कर लो. उन्होंने कुछ नहीं बताया. एंड जब मैं अपनी पहली कंपनी का टेस्ट देने गया था ना, गोल्डमैन सैक्स एंड आर्सीजियम, उन्होंने एप्टीट्यूड पूछ लिया मेरी. आई वाज लाइक यार ये एप्टीट्यूड ही पूछता है, मेरे एप्टीट्यूड हुआ ही नहीं. सो दे डोंट टेल यू नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर टेलिंग गाइस कि यार कर लो, क्योंकि कहीं Correct, पे भी कुछ correct. जा सकता है. सो Right. this is the thing. Yeah. Okay, can you tell some of the best web development courses from Udemy? I don't think we'll be able to talk about, some courses out here. I guess that would be something off our topic right now. Okay, I skipped DS in college but interested in web dev, but not able to decide which shall I do now. Hearing need DSA for good placements. Yeah, I guess. Okay, so Naman, what do you think? If a person wants to go for web development as a career, I guess for him also DSA would be something which would be needed for the interviews. I guess, I mean, yeah, obviously, yes. So, for example, even if you want to go for a career in web development, and if you're in a college, I'm talking about college students. So, college students जब अपनी drive के साथ जाते हैं तो उनसे expect करते हैं कि at least they know data structures, right? And then you Correct. can just tell them that you're proficient, and then you want to work on this type, on this stuff. Like for example, even when I went into Microsoft, तो मुझसे question पूछा था कि मैं कहाँ काम करना चाहता हूँ, वेदर आई वांट टू वर्क इन अ फ्रंट एंड और बैक एंड, या मुझे कहाँ काम करना है. तो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस की स्टार्टिंग में यू कैन गो फॉर, उनसे डीएसए पूछा जाता है. बट अगेन सिर्फ यही बात नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो से अपने वेब डेवलपमेंट की यूएसपी की वजह से भी कंपनी है. सर मल्टीपल ट्रैक्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कॉमन ट्रैक. तो अगर आप कॉलेज की तरफ से जाते हो तो या इन एन इंटरव्यू दे एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो डेटा स्ट्रक्चर्स. Yeah, because that's the basic thing that they दैट्स require, right? बेसिक. In या yeah, एक इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, काफी लोग बोलते हैं डीएसए काम नहीं आएगी तुम लोगों को, है ना. तो huh? मैं ये बता देता हूँ कि डीएसए सच्ची काम आती है, कहीं ना कहीं तुम्हें काम आती है. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज माय वर्क, लाइक आई हैव लिटरली वर्कड ऑन डीएसए
और मैंने डीएसए को ही अप्लाई करके अपनी कंपनी में काम किया है। सो आई टेल यू, डीएसए सच्ची इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पे भी तुम्हें काम आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करेक्ट, नहीं होता करेक्ट. कि डीएसए काम नहीं आती, तो ये इस पे ध्यान मत देना कभी। Yeah, I guess DSA. I don't know if considering कि job लगने के बाद काम आती है या नहीं, but I guess for now DSA is the basic thing because online assessment या college जाके जो interview assessment देना पड़ेगा, that's the basic thing that they ask Yes. you. Aptitude, you clear aptitude, then you go for your online assessment, and that's when you get the chance to at least sit in front of interviewers. So no matter how much you are good with communication, no matter how much you're good with your skills, if you're not good with DSA, you're not even allowed to go and sit there, right? Exactly, that's correct. Okay. Okay. So I've completed C, C++. What should I have to do after these? Java or Python for getting placed in top product-based company MNC? I guess you should stick on C, C++ and go for DSA and not other languages, I guess. Yeah. I mean, changing your language does not help you. Being good Right. at one language is better than being intermediate at Yeah. all the language. Because if you're going for all the languages, you're jack of all, master of none. But what they want is a master of a single language. Exactly. I guess that's more important, and that's what is required for now. Okay, I'm stuck at arrays and strings for a long time. I'm not able to move forward. What should I do? Stuck at arrays and strings for a long time. Okay, so I'll tell you. मैं एक बहुत important बात करने वाला हूँ। तो Hmm. initially when I was at Code Forces, I'll tell you, मैं Code Forces से practice करता था। तो Code Forces पे ना, when I came on to uh, Pupil, प्यूपिल या Okay. स्पेशलिस्ट, हाँ प्यूपिल पे था। आई टेल यू अबाउट प्यूपिल। व्हेन आई वाज एट प्यूपिल में आई यूज्ड टू स्टडी एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स अ डे। मैं प्रैक्टिस करता था। आई केम ऑन टू प्रॉब्लम सेट, क्वेश्चन करे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं Okay. हो रहा प्रॉब्लम सेट रेटिंग देख रहे हैं। एंड आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ वीडियोस। श्राइवर भैया के देखता था मैं, बहुत लोग के देखता था कि उन्होंने ग्राफ कैसे इंक्रीज किया है। आई यूज्ड टू सी लाइव स्ट्रीम ऑफ एरिक्टो, इफ यू नो एरिक्टो। Yeah, ठीक है, I've heard of him. हाँ तो एरिक्टो की मैं स्ट्रीम्स देखता था। दे यूज्ड टू टेल मी हाउ डिड दे प्रैक्टिस। में देखता था, मेरे को महीना हो गया था। आई वाज नॉट अबाउट टू इंक्रीज माय रेटिंग एट कोड फोर्सेस। Okay. एंड मैं अपने कॉलेज फ्रेंड को रैंट करता था रोज रात को, यार इतनी मेहनत कर रहे हैं रोज 10-10 12 घंटे। दिस इज आफ्टर व्हेन आई गॉट माइक्रोसॉफ्ट के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद भी थोड़ा प्रैक्टिस करता था। आई यूज्ड टू रैंट टू माय फ्रेंड कि यार रेटिंग नहीं बढ़ रही है। पता है इसका दी ओनली थिंग इज हम हमारी कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। Correct. ठीक है। Same thing was told by Arjun. Yeah, last stream. अच्छा, ग्रोवर अर्जुन, ऑलराइट, Yeah. ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड। तो हम ना हमारी कंफर्ट जोन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे इफ आवर लेवल इज 1600 ना, हम 1600 से 1650 तक की प्रैक्टिस करते हैं। सो टू इंक्रीज योर लेवल, अगर तुम्हारे को चीजें नहीं समझ आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कम करके जस्ट रिड्यूस करो एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड देन इंक्रीज योर रेटिंग। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। जब मुझसे क्वेश्चन नहीं होते थे, मैं थोड़ा अपना रेटिंग क्या करता था, थोड़ा नीचे कर लेता था। ठीक है, आई यूज टू लोअर माई रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी करंट रेटिंग इज अराउंड 1600 ऑन कोड फोर्सेस एंड मुझसे भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे बिकॉज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, सो व्हाट आई यूज टू डू इज, मैं 200 अपनी रेटिंग कम कर लेता हूँ, लोअर कर लेता हूँ रेटिंग। सो आई डू क्वेश्चंस इन द रेंज ऑफ 1400 और 1300 to 1400, जिससे मेरा कोडिंग वापस से थोड़ा फ्लुएंट हो जाए एंड देन आई इंक्रीज इट। Correct. कोडिंग जज करने का तरीका है कि आप कॉन्टेस्ट दो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो, और नहीं हो रहे थोड़े इजी क्वेश्चंस करने लग जाओ एंड ट्राई टू डू। इसका मेरे को एक आंसर पता है कि, पता है लोग कहते हैं कुछ रेशियो होता है 5:3:2, मैं भी कहता हूँ क्वेश्चंस करने के लिए। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं जितने ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है ना, उतने ज्यादा इजी क्वेश्चन करता हूँ। व्हाई? बिकॉज डूइंग इजी क्वेश्चंस मेक्स यू परफेक्ट एट टू थिंग्स। कि एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, आपको है ना छोटा कोड लिखने को समझ आता है कि हमने ये क्वेश्चन पहले किया था। एंड बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इजी, तो आपके अंदर एक ना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। Correct. पता है इजी क्वेश्चन करने का एक फायदा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा ये कि आपको कॉन्फिडेंस देगा लाइफ में कि यार मुझसे Correct. क्वेश्चन बन रहे हैं। और जब तुम लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझसे क्वेश्चन हो रहा है, तो तुम थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस में जाने का सोचोगे। 50% of the times when you sit to solve a medium or a hard level question, 50% of the time you are not able to solve it because you are underconfident. कि अरे यार ये एग्जैक्टली, hard है, ये यार ये medium है. हार्ड है, हाँ ये मीडियम है, वो वही same कॉन्शियस question, if the label is removed medium and it's put as easy, you'll be able to solve it. हो जाता है। हाँ Right. So it's like our subconscious
mind telling us कि भाई नहीं ये मुश्किल ही है, ये हाँ नहीं ही भाई नहीं होगा. होगा ये. हाँ. So I तो guess getting a little more confident solving more easy questions is not a bad pick. बैड थिंग. और इजी Yeah, क्वेश्चन में ना आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि इजी होता है तो आप कर भी लेते हो. उससे ना आपका correct. कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. और एक्चुअली दिस इज द नीड ऑफ आर. अगर आप Right, कॉन्फिडेंट हो ना एक क्वेश्चन को देख के कि यार ये हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन सच्ची हो जाएगा. एंड इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट तो आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, चाहे आप घंटा लगा लो. तो मैं correct. तो हमेशा ये करता था, बिफोर डूइंग सम क्वेश्चंस आई यूज्ड टू डू इजी क्वेश्चंस, जिससे हम लोग कॉन्फिडेंट रहे. Okay. यस. Uh, Bhaiya, I'm in third year. I'm doing DSA with C++. By love bubble placement course, but I don't have any project. Okay, yeah. So Naman, did you have any projects on your resume? या आई डिड हैव इट. How तो many and what were they? आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट मैंने एक ही मेंशन किया था. बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट अदर प्रोजेक्ट्स. आई टेल यू, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी इंटर्नशिप के पहले प्रोजेक्ट्स में. इन टर्म्स ऑफ आई डिड न्यूरल नेटवर्क्स, आई डिड डीप लर्निंग, एमएल, वेब डेवलपमेंट. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, बट आई वॉज नॉट मास्टर एट इट. मेरे को एक चीज़ आई वॉज गुड एट. मेरे को एक अपना कोर्स, एक अपना प्रोजेक्ट पता था, मैंने वो डाला था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट विच आई मेड बाय माई सेल्फ. तो मैंने वो मेंशन किए थे. सो इफ यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट के ऊपर जब मेरी बात हुई थी मेंटर से, सो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. Hmm. Why did you choose that project? What is the USP of that project? And आपने वही प्रोजेक्ट क्यों किया? ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का यूज केस क्या है. प्रोजेक्ट अच्छा होने का मतलब ये होता है कि दैट यू आर इंक्लूडिंग फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड टू इट. बिकॉज आई गेस जब भी बच्चे प्रोग्रामिंग चालू करते हैं, इफ दे आर लर्निंग अ कोर्स, दे ऑलवेज स्टार्ट विद फ्रंट एंड, जो कि बहुत ईजी होती है. Right. Front end has nothing. So if you want to stand out in terms of project, I think you should include backend. तो मैंने backend Hmm. include किया था. I did something related to compression only. मैंने compression से related ही एक project किया था, in which I was compressing a text editor. एक text file थी, compress करा था using multiple algorithms, in which I used gzip and lz4. These are some good serialization and deserialization techniques. So I used that, which was a very good project. तो मैंने ये use किया था. And projects are actually important, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि what is your work in the industry, वही तुमने क्या करा. and नहीं आ पाए तो there you screw up. हाँ, तो वो ना एक सेकंड में समझ जाते हैं कि आपने किया या नहीं किया. Right. बिकॉज या दे हैंडल यू विद दैट वे कि उनको समझ And आता है कि हाँ क्या. 90% of the interviewers get to know कि वो copied है या नहीं. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट नेट से उठा के थोड़ा बहुत चेंज करके उसको देते हैं. तो I guess that shouldn't be done. वो एक या क्लिक में पकड़ा जाता है. तो थोड़ा Okay. प्रोजेक्ट खुद बना लो, महीना भर Yeah. करके हो जाता है काम. MCA students eligible for SDE in Microsoft. I guess again we are not sure about it. नहीं हो जाता है कबीर, आई हो जाता है. Okay, MCA students are Yeah, eligible. all are eligible. Again, I'll tell you, whenever interviews देखते हैं ना, तो they see your skills. So Correct. if you have outstanding skills, so yeah, you can just contact them to HR. That's your work. So हो जाता है. I've seen BCAs going in Microsoft, so I guess अगर BCA जा रहे तो MCA they can go obviously. Correct. Naman, where did you do your internship at college time? He did his internship from Microsoft, right? That was the only internship you've done? Yep. Oh, okay. Is there any preferential placement of a B.Tech student in CS uh, and a BCA student in the same course? I didn't get your question. How to handle DSA and development together? How did you handle it? Okay. Again, a very good So question. very good questions, and the answer to this is कि भाई दोनों को एक साथ मत करना, नहीं तो दोनों खराब होंगे. Correct. ठीक है, दोनों खराब हो गए. आई टेल यू कि पता है, जैसे मैं तुम लोग को इसका आंसर देता हूँ. इफ यू टॉक अबाउट स्ट्राइवर, इफ यू टॉक अबाउट जो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है, उनकी यूएसपी क्या है, दैट दे आर वेरी गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, दे आर वेरी गुड लॉजिक. even if they don't have a good project, I don't know if they have it, होगा obviously, but I'm just telling you, Correct. उनका जो यूएसपी है, that is their programming skills, that is they are good at programming. तो अगर तुम किसी एक चीज में अच्छे हो, then also you do have chance. तो मैं ये Correct. कह रहा हूँ कि दोनों को साथ करने में आपका दोनों परफेक्ट नहीं होगा. इट्स बेटर कि आप एक चीज अच्छी कर लो, एक चीज अच्छी कर लो, फिर दूसरे के अंदर ड्राइव करो. सो व्हाट आई थिंक इज, मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई पहले जितना तुम्हारे पास टाइम है उसमें पहले डीएसए कर लो. ठीक है, द रीजन Right. भी, जैसे अगर आज आप डेवलपमेंट चालू कर दोगे ना, हो सकता है जब आप बीच में डीएसए करने लग जाओगे ना, आप डेवलपमेंट छोड़ दोगे, डेवलपमेंट भूल जाओगे. दैट हैपेंड विद मी. मैंने पता है क्या किया था, मैंने
मई के अंदर ना डेवलपमेंट उठा ली थी, और मैं मई Okay. के बाद वापस से जब इंटर्नशिप आने लगा मैं प्रैक्टिस करने लग गया, डीएसए करनी है, टेस्ट आएंगे, तो मैंने डीएसए चालू करी, उड़ गया सब, वेब डेवलपमेंट खत्म, कोई Okay. बैकएंड था, नोड जेएस नहीं आता, नोड जेएस भूल गए, सिंटैक्सेस भूल गए, सब खत्म था उस टाइम। मैं वही कह रहा Correct. हूँ, मैंने प्रोजेक्ट किए थे, मेरे को हटाने पड़ गए। आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स अगो व्हाई मैंने उनको हटाया, इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था वापस। तो इट्स Correct. बेटर कि जो चीजें आपको लगता है आप भूल जाओगे उनको वो एंड में करो। वो एंड में करो। तो आप करेक्ट। ऐसा कर सकते हो, अगर प्रोग्रामिंग अभी चालू करोगे ना, प्रोग्रामिंग में अगर आप बहुत अच्छी रेटिंग पे पहुंच गए, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 स्टार कोड शेफ पे बन गए, हाँ। अज्यूमिंग आप 6-7 महीने 5 स्टार बन गए, अब अगर आप 1 महीने प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपकी लेवल एटलीस्ट 4 स्टार की जितनी तो होगी ही। करेक्ट। 4 स्टार राइट। से आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लो, यू अगेन कम बैक ऑन द ट्रैक। अब ये राइट। जो एंड वाले डेज है ना, महीना भर, उसमें आप अपना वेब डेवलपमेंट कर लो, जो आपको करना है वो कर लो, और 5-10 दिन प्रैक्टिस कर लो, एंड एट दी एंड में आप है ना, सिर्फ क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, डेवलपमेंट के टाइम आपको सिर्फ कॉन्टेस्ट देना है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है प्रोग्रामिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक यू अबाउट, मैं आपको टाइमलाइन के टर्म्स बताऊं, तो जैसे अगर आपके पास 6 मंथ है, तो ऐसा करो 4 महीने डीएसए कर लो, छोड़ दो वेब डेवलपमेंट, लीव ऑल द ओके। डेवलपमेंट, साइड में पटको, 4 महीने दबा के कोडिंग कर लो कि आपकी कोडिंग इतनी अच्छी हो जाए कि कोई आए नहीं सामने। अब ये 2 महीने आपको सिर्फ डेवलपमेंट करनी है, अलॉन्ग विथ रोज जिस दिन भी कॉन्टेस्ट हो रहा है कोई, उस दिन 2 घंटे कॉन्टेस्ट दे रहे हो। देखो आपकी प्रोग्रामिंग रोज चल रही है, जिस दिन कॉन्टेस्ट है प्रैक्टिस आपकी होती जा रही है, और आपका लेवल ही इंक्रीज हो रहा है, और आप डेवलपमेंट को पूरा टाइम दे रहे हो। करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज आई टेल पीपल, शिफ्ट कर लेना, बस कॉन्टेस्ट देते रहना, एंड के अंदर ये प्रैक्टिस तुम्हारी चलती रहेगी, और एंड में डेवलपमेंट करो जिससे तुम्हारा हैंडी रहे सब कुछ। Okay. How do I get internship in at Microsoft in my third year? I am from Tier 3. I guess you only get it in your internship year, right? उससे पहले नहीं देते हैं। क्या? आई डिडंट गेट यू। Internship at Amazon. Oh, sorry, internship at Microsoft, Amazon, any FANG company. I guess there's a specific rule that you need to be in your final year, right? नहीं, थर्ड ईयर के अंदर दे देते हैं Third year, सम। last semester. हाँ, थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर के अंदर दे देते हैं, एंड टेस्ट होते हैं कई बच्चों के सेकंड ईयर के अंदर भी होते हैं, व्हेन दे एनरोल फॉर एंगेज प्रोग्राम, जो मेंटी प्रोग्राम, इंटर्नशिप मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू दे गेट इनटू इट, बट आफ्टर दैट दे गेट समर इंटर्न। थर्ड ईयर के Okay. बाद में समर्स में दे इधर दे गेट अ समर इंटर्न, और 6 सेमेस्टर में लाइक वी हैड आवर Winter इंटर्नशिप intern. सेमेस्टर, सो इट डिपेंड्स, थर्ड ईयर के बाद ही मिलती है। तो Okay. yeah, that's it. I love DSA, but college studies cause the hindrance again and again. I'm a first year and studying in a tier 3 college. Will these gaps due to exams kill all my chances of getting a nice placement? I don't think so because everybody who gets a placement gives exams. So I don't think that would यार you कॉलेज know. कॉलेज के अंदर मतलब आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक यार, हफ्ते भर पहले ही पढ़ते हैं बच्चे। आई डोंट थिंक सो कि तुम हाँ. साल भर पढ़ोगे एग्जाम के लिए। अगर पढ़ते हो Right. तो अच्छी बात है, मतलब आई एम, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। सो Yeah. Correct. और भाई फर्स्ट ईयर में होना तो अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर हमने तो सेकंड ईयर के एंड में पढ़ाई चालू करी है, एटलीस्ट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, अभी दबा के Right. प्रोग्राम करो। Yeah, and this is a really nice example for you guys that Naman started after his second year. So we get a lot of students who ask that I wasted the first 2 years of my college. I want to start coding. Am I on time? Am I very late? Or something like that. So if you're starting in your third year also, I guess more हो than जाता है enough. यार, है. हो जाता है, मतलब आई टेल यू, पता है मैंने जिस तरीके से अपना मैथडोलॉजी अपने जूनियर्स को बताई है ना, माय जूनियर्स, माय फेलो जूनियर्स, जिनको मैंने डायरेक्टली मेंटर किया, इवन दे आर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, ठीक है, दे आर Correct. आल्सो इन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, एंड दे ट्राइड माई वे ओनली। मैंने उनको जिस तरीके से बताया उन्होंने वैसे ही पढ़ाया। पता है ये बहुत ईजी सा टास्क है, बट यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, आई डोंट थिंक देयर इज नो काइंड ऑफ हिंड्रेंस। और ये जो सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाली चीज है ना, आई डोंट थिंक इसको ईयर वाइज मेजर करना चाहिए। इट्स अबाउट द टाइम दैट यू कैन गिव इनटू प्रोग्रामिंग। अगर तुम फोर्थ Correct. ईयर ये सोच रहे हो कि मैं फोर्थ ईयर में आगे प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट 3 महीने पढ़ लो, नेक्स्ट 3 मंथ पढ़ लो, तुम लोग चल जाओगे अच्छी कंपनी में। इट्स नॉट अ थिंक कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में। सो इट्स इजी टास्क, जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे यू आर गोइंग टू पास थ्रू इट। So, like, what we can conclude on our roadmap is that if we kind of choose a language, complete the DSA, and consistently solve questions, हम्म। give contests, and after doing that, do development and contests together,
I guess that's more than enough, and this That's more may than take enough. 6 to 8 months depending on student to student. Yeah, depend. Yeah, exactly correct. Okay. So I guess it was a really nice stream with Naman this time. And I guess everybody, we tried to answer 90% of the questions out there. So I hope you guys liked it. And I'm going to come back next Friday with another topic for you guys. And thank you so much, Naman, for coming along on this stream. I wish to have another stream with you. Thanks, man. Thank you so much. Thank you so much, guys. Have a nice evening.